Excellent. ठीक है जी. Okay. Can you all see me? Angle वगैरह ठीक है? Screen सही नजर आ रहा है? जी मैडम. Okay, great. So जो मुझे टॉपिक दिया गया था, that was pitfalls in the management of epilepsy. Basically pitfalls क्या है? Challenges ही हैं. And pitfalls का तो मतलब ये है कि हम हाई ही करते रहें, कोई solution नहीं कुछ. तो and I know कि इसके बाद specifically in Pakistan, Dr. Wase will be talking about that. So why is it not? Next slide. Yeah. So basically, disclosure, so I have no actual or potential conflict of interest. So the scope of this so what I decided to do was to guide the management of acute epileptic seizures, focusing on the current challenges, pitfalls, the problems that we have across different practice settings in various patients. So basically different practice settings में क्या in general क्या हमारी problems हैं, और जाहिर है इस scope और 20 मिनट के अंदर सिर्फ हम दो specific main problems और issues जो हमें आते हैं, challenges जो होते हैं epilepsy management में, एक तो general challenges हैं जो आप stigma वगैरह का आपने डॉक्टर महेंद्रा को सुना है, आपने सबको सुना है, और दूसरा जो है वो specific like women का आपने सुना, लेकिन basically pregnancy में जो challenges आते हैं they are very devastating. और तीसरा जो है वो is the geriatric patients, elderly में एक dilemma होता है, epilepsy की management becomes, फिर जो comatose होते हैं उनमें epilepsy की management, and then जो psychiatric patients होते हैं उनमें how much of it is real seizures and how much of it are old seizures. So we're going to only talk about the first two. So basically देखिए आप लोगों ने ये बार सुन लिया, it is one of the most common, it is according to Dr. Tipu Sultan the commonest, but and this condition it afflicts about 2.9 million. So it's a US में it's an economic impact of $15.5 billion सिर्फ epilepsy का. तो it's very important उन लोगों के लिए भी, लेकिन हमारे यहाँ तो उससे भी ज्यादा है, 2.2 to 2.5 million people. तो the issue is कि despite इतना significant burden इस disease का, it's still not very well understood. अभी भी when the patient comes to us and says, why me? Half the time we don't have an answer. How did it happen and why did it happen? It just happens. So, one of the main challenges in the management of epilepsy and this condition is to know what the patient feels. What's the patient's perspective? Because at the bottom line, we're all clinicians and we want to help our patients. So in order to do that, now अब देखें आप कि चाहे वो विंसेंट वैन गो हो 1890 में, चाहे कि वो कोई ये सुनते ही उसको तो मौत नजर आ रही कि बस एपिलेप्सी यार कुछ और हो जाता है, एपिलेप्सी नहीं होती. And then there are patients who feel like they've gone into a shell. There are patients who call it an enigma, a paranoia, and ignorance. And the ignorance leads to them being lonely and bound with persistent seizures. And the million-dollar question, why me? ये challenges हैं और इनके answers हमें देने होते हैं as physicians. And we really don't have very good answers for them. So general challenges आपने डॉक्टर महेंद्रा को सुना ही है. And the stigma. The stigma is a frustration, and we are trying. And I think programs like these, especially to make aware, to create awareness amongst medical personnel, and then public awareness and media can help reduce the stigma. But the need. So, हमारे general challenges में क्या है? We need our physicians, because we don't have that many neurologists to be treating all the epilepsy patients. So we need our clinicians to stay up to date with the latest advances and to provide the best care for patients.
In the last 20 years, FDA ने 15 new anti-epileptic anti-seizure medications दिए हैं, approve किए हैं. Diagnostic modalities, EEG में इतनी advances आ गई हैं. Devices like vagus nerve stimulator, जिसका अभी बताया, deep brain stimulators, and then there are these SEEGs and RNSs, जो कि अभी बिल्कुल latest अभी आई हैं. And then, there are these novel alternate routes of drug administration and improvement in surgical techniques. तो मगर हमारे यहाँ ये सब चीजें हैं, लेकिन frustration कहाँ पे है कि most new modalities are costly and they're not available. And if they are available, they're not easily affordable to the general Pakistani. अब एक VNS ही का जो है खर्चा पाकिस्तान में डॉलर, ये जो रुपये का जो फ्री फॉल हुआ है, इसमें डॉलर की प्राइस इतनी ऊपर चली गई है कि 25 लाख से एकदम 50 लाख पे चला गया, 50-55 लाख. So that's a lot of money for a device, तो ये frustrations हैं, and organizations, NGOs, plus government subsidies and all may help to improve the quality of life in a lot of these medically refractory epilepsies. So the thing is that seizure is not just a GTC. One of the the pitfalls keh le, aap challenge keh le, is actually diagnosing and recognizing the seizure and where it's coming from. There are over 50 different types of seizures that have been recorded over a month in epilepsy clinics. मुख्तलिफ phenomena होते हैं, psychomotor phenomena होते हैं. It's very difficult. Sometimes खाली smell आ रही होती है. Sometimes if hallucinate कर रहे होते हैं, आपको नजर भी नहीं आ रहा होता. Sometimes खाली buzzing हो रही है, music आ रही है, depending on where the seizure is. So not all epilepsies are GTCs and not all jerks are epilepsy. So it's to know and to be able to recognize a true seizure from other conditions and to know your differential is very important, because that is where, and it is because of this diverse nature of the disease, the automatisms, the chewing movements, the wetting lips, automatisms, plucking at clothes, like ekdam aise lag raha hai, going into a trance and then going, and then sometimes laughing as if you're talking to someone or that. So then they say that you are possessed, or stigmas, or ye isi cheezon se create hote hain. तो हमें इसकी awareness, क्योंकि हम in general istalaat in our patients, they would only say that a person has epilepsy if they have a full GTC, but that is not the case. So then हम ये clinically वो कर भी लें, तो then one of our main challenges are the diagnostic facilities. We have a lot of EEG machines all over the place, but the quality and unfortunately the reporting is very substandard. And that is due to lack of qualified neurophysiologists. I mean, surely there must be some kind of difference when a person has to spend 2 years training into how these EEGs and all work after becoming a neurologist, and someone, who hasn't done that. There must be a lot of things that we may miss. So, it's something that we need to see, and we need to qualify more doctors, and we need to hold more workshops, and we are in the process of doing that, but hopefully. So, and then MRI. In the seizure protocol, what we get is when people come to my clinic and that I get an MRI, a screening. And then कहते हैं MRI तो हो गई, normal है जी, हम दोबारा क्यों करवाएं? Why should we do it again? It should be ideally in a 3 Tesla, not less than 1.5 Tesla machine. Okay, but the 3 Tesla obviously is rare and expensive. Seizure protocol may in adults. Adults का seizure protocol as compared to बच्चों का जिसमें dysplasia protocol करते हैं, is different.
You need thin cuts through coronal sections. You need flare images, and you need contrast images, and thin cuts in the coronal sections, and then the dysplasia protocol, and in children you need thin cuts across the frontal lobes, and so those are things that and then to differentiate from epileptic seizures and non-epileptic seizures, we need a video EEG. These are available, but they're very rare and very expensive, because obviously it's something that's going to decide your fate. Do you have epilepsy or not? One. Number two, if you have epilepsy, where is the origin? And is that origin, that epileptic focal point, is that point actually going to, coincide with what's showing on the MRI? And if that is, we can easily and is that operable? So we could just do an epilepsy surgery, which has been time proven and shown good results. So, but without the proper diagnostic facilities, we're kind of lost. Obviously, जब ये सब कुछ हम diagnose भी करके दे दें, तो फिर, where do we go? Spiritual healing of epilepsies? It's a very common practice in Pakistan. But as long as उसके साथ दवाई भी ले लें, I think I'm okay with that. Myths and misconceptions, I think we've had a whole talk on that, so I'm not going to go into a whole lot of details. The therapeutic frustrations. Polytherapy, multiple drugs, subtherapeutic doses. I did a whole study on this, and it's not a part of, it's beyond the scope of this presentation, but every time a person has a seizure, a new drug is added. That's not how it should be. It's one drug, maximize, or if it can't be tolerated, add another drug, remove the previous drug. Patient non-compliance. जितनी ज़्यादा आप दवा देंगे, उतनी compliance खराब होती जाएगी. And अगर TID देंगे तो compliance खराब होगी. BID better होगी. OD will be much better. Increased costs of branded medications. Lesser efficacy with non-branded drugs. Lack of awareness and compliance. And then अभी जो है drug shortages. इतनी shortages हो रही हैं कि it is becoming very, very frustrating. I mean, we've done the diagnosis, we've done everything right, we've even given the right prescription. But unfortunately, we don't have the drugs to treat them with. How pathetic is that? So, now the other challenge is the medication availability की हमने बात की, इसकी selection. How do we select the right drug for the right type of epilepsy? Selection in women, multiple comorbids, in the elderly, in children. How will we do that selection? Depending on, is this a woman? Does this person have multiple comorbids? What other medications is he taking? Age factor क्या है? बच्चा है, elderly है. Affordability क्या है? And then obviously, when we're selecting, we want one with the fewest side effects, or a side effect that will help us. Compliance. ऐसी हो कि जो frequent dosing नहीं करनी पड़े. And easy access. So those are the things, those are the challenges we have, and this is how we this is how we pick them. ठीक है? So the pregnant lady in pregnancy. So epilepsy and seizures in pregnancy, इसका अपना एक unique set of challenges है. क्योंकि इसमें patient को भी देखना है आपने, fetus को भी देखना है, और अपने की सोच को देखना है. So 3 to 4 births per 1,000 will be born to women with epilepsy. And these women, when pregnant, face a 10-fold increase in odds of dying, 10-fold increase in odds of dying compared to the general population. So this exceeds the 2 to 3-fold increase in standardized mortality rate observed throughout life in people with epilepsy. The pregnancy में overall
मोर्टेलिटी भी बढ़ जाती है इन women with epilepsy. और फिर एंटी सीजर मेडिकेशंस, सिग्निफिकेंट इश्यूज, तो इनको एड्रेस करना है हमने प्री कंसेप्शन प्लानिंग से लेकर फिर प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी एंड द पोस्टपार्टम स्टेज एंड अफेक्टिंग द इन्फेंट टू. तो हमें हर चीज को, तो यहाँ पे एक ही पेशेंट के अंदर हमारे पास इतने सारे चैलेंजेस आ जाते हैं. एंड द pitfall that we have here is time. Most of us are so busy in our practice that we don't have the time to give and to spend with these patients. So, the main issues are potential teratogenic effects of anti-epileptic drugs, effects of maternal seizures on the mother and fetus, and the genetic risks of seizures. Right? So genetic risk jo hai, that's a calculated risk and it's not very high. The other two we will talk about briefly. So teratogenicity jo hai, wo sabse zyada kisme hoti hai. Valproate and phenytoin. Valproic acid is the most incriminated cause of malformations and so should be avoided. A dose associated increase in the risk, तो जो मुख्तलिफ स्टडीज देखी गई हैं उसमें जो डोज एसोसिएटेड इंक्रीज है इन द रिस्क ऑफ कंजेनिटल, जितनी हैवी डोज होगी उतनी रिस्क ज्यादा है, जितनी कम डोज होगी उतनी कम है. Evidence-based seizure control is less likely to be maintained in patients who are untreated. तो ये जो कहना है कि हम दवाई बंद कर देते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मोस्ट ऑफ द टाइम इनका जो है सीजर्स अनकंट्रोल हो जाते हैं. फिर सीजर का अपना रिस्क है उस माँ के ऊपर. सो रिडक्शंस इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग्स, तो मेनली ड्रग्स जो है ना हीमोडाइल्यूशन होती है प्रेगनेंसी में, तो लेमोट्रिजीन, ऑक्सकार्बेज़ापिन खास तौर पे, ये जो है इसकी कॉन्सेंट्रेशन यानी सेम डोज बिफोर प्रेगनेंसी ठीक थी, अराउंड द 5th or 6th मंथ इसकी जो है हीमो कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है एंड दैट स्टार्ट्स कॉजिंग सीजर्स. तो ऑल यू हैव टू डू इज इंक्रीज द डोज. फिर स्ट्रक्चरल टेराटोजेनेसिस ड्यू टू फर्स्ट ट्राइमेस्टर, तो मोस्ट स्ट्रक्चरल टेराटोजेनेसी जो है ना, तो यानी कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स वगैरह, ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर एक्सपोजर है. तो इसलिए प्री कंसेप्शन काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वंस कंसेप्शन हो गई उसके बाद आप दवा बंद कर लें. यू नो, आई हैव हैड पेशेंट्स कि दे वर ऑन द मेडिसिन एंड 3 months पे यू नो द गायनेकोलॉजिस्ट सडनली रियलाइज, ओहो ये इसमें, जाएं जल्दी न्यूरो को देखें. न्यूरो के पास गई या न्यूरो के पास नहीं गई, किसी भी डॉक्टर के गई एंड डॉक्टर ने फोन, ओहो हो ये तो आप ये ले रही थी, 4था महीना है, 5वां महीना चल रहा है, फौरन जी आप वैल्प्रोइक एसिड बंद कर दीजिए, बिकॉज ये तो बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए. जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होने थे ना, अगर होने थे तो वो हो चुके हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर. ट्राई टू रिमेम्बर दैट. एंड फिर क्या होता है कि व्हाट एंड्स अप हैपनिंग इज के they suddenly cold turkey stop that, because you know half the first trimester passes by when the person doesn't even know they're pregnant. So what happens after that is then they start giving some other medicine. वो medicine अगर suit नहीं करे, because this person was very well controlled on a very low dose of this medicine of valproate, and suddenly उसको seizures हो जाते हैं. उनको GTC हुए, उससे जो बचा कुचा बच्चे का वो था एंड मदर का खुद का वो भी आपने खत्म कर दिया, बिकॉज after the second trimester, from the mid second trimester to the third trimester, seizures are detrimental for the mother and for the child. तो एक तरफ दवाइयां ज्यादा खतरनाक होती हैं, दूसरी तरफ लेकिन हाई डोज ऑफ दवाइयां जो है ना, वो कॉग्निटिव इफेक्ट्स जो है ना, वो तो थ्रू आउट प्रेगनेंसी रहेंगे, उसका ताल्लुक स्ट्रक्चरल से डिफरेंट है. So most of the causes of seizures during pregnancy, the trauma, CVAs, CVSTs बहुत कॉमन है. एक्लेम्सिया में भी सीजर्स होते हैं, देखिए प्री एक्लेम्सिया, एक्लेम्सिया में भी सीजर्स होते हैं, लेकिन उनकी मैकेनिज्म डिफरेंट होती है.
infections और फिर मतलब you know. So basically जो यूरोप स्टडी जो है, this was a prospective observational study of pregnancies with anti-epileptic drugs. It was launched in Europe in 1999 by a consortium of independent research groups and later इतनी सारी आप देखें कंट्रीज जो है ना वो ज्वाइन करती गई और सारी प्रेगनेंसी की। तो इसका एम जो था, इसने क्या किया कि इट कलेक्टेड डेटा ऑन द रिस्क ऑफ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड टू शेयर इट इन एन इंटरनेशनल रजिस्ट्री। Physicians from 46 countries in Europe, Oceania, Asia, Latin America, and Africa have participated to the study, and more than 28,000 pregnancies have been registered so far. और इसमें सारा ये सब जमा कर रहा है, उसमें आप देख सकते हैं कि कौन सी ड्रग ले रहे थे कौन, उनके कंपाउंडिंग फैक्टर्स क्या थे और पेशेंट को असर क्या हुआ। अब दूसरा इश्यू जो है ना कि सीजर का, पहले तो हमने दवाइयों का किया, उनकी टेराटोजेनेसिटी का, फिर ब्रीफली मैंने आपको बताया ना कि मैटरनल सीजर मदर को क्या होगा और फीटस को क्या होगा। देखिए मदर का तो जनरल, चाहे वो मदर हो चाहे वो कोई भी पर्सन विद एपिलेप्सी हो, गिर सकता है, बर्न हो सकता है, ठीक है, एंड फीटस को इंजरी हो सकती है इन द प्रेग्नेंट मदर। तो सिर्फ वो मदर को ही नहीं होगी बल्कि बच्चे को भी इंजरी हो सकती है। सीजर अगर जीटीसी होते हैं तो प्लेसेंटल एब्रप्शन हो सकता है, प्रीमेच्योर लेबर में जा सकती है, प्रीमेच्योर डिलीवरी करनी जा सकती है और उससे फिर और सारे प्रॉब्लम्स होंगे बच्चे में भी। स्पॉन्टेनियस अबॉर्शंस हो सकते हैं, प्रीमेच्योर इंडक्शन ऑफ लेबर करनी पड़ जाती है, सी सेक्शंस इंक्रीज हो जाते हैं, पोस्टपार्टम हेमरेजेस हो जाते हैं। फीटस को क्या होगा जब बहुत ज्यादा अगर जीटीसी स्ट्रांग हुआ तो ऑब्वियसली प्लेसेंटल सर्कुलेशन भी रुक जाती है, हाइपोक्सिया एंड फीटल डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है, फीटल ब्रेडिकार्डिया, ट्रांजिएंटली डिसेलरेशंस, डिक्रीज बीट टू बीट वेरिएबिलिटी, कॉम्पेंसेटरी टैकिकार्डिया, और ये सारी चीजें दे ऑल रिवर्स विद इन द फर्स्ट 3 to 5 minutes। उसके बाद जो है ये गड़बड़ होती है, तो 3 से 5 मिनट तक आफ्टर द कन्वर्जन टर्मिनेट्स रिवर्सल हो जाता है, बट आफ्टर दैट इट कैन बिकम अ इश्यू, सो दैट इज व्हाई वी वांट टू अवॉइड सीजर्स लेट इन द प्रेगनेंसी। सो नेक्स्ट हमारा जो है ना वो है एल्डरली में। तो एल्डरली में जो है 25% of new onset seizures are thought to occur in elderly over 65 years of age. At least 10% are thought to be attributable to neurodegenerative conditions, which is a 6-fold increase risk of seizures, specifically in Alzheimer's disease. फिर usually जो adult onset new onset seizures होते हैं, they're usually focal seizures with secondary generalization. They're like जिन्हें हम scar epilepsy कहते हैं, secondary to stroke, tumors, trauma, falls, organ system dysfunction. Organ system dysfunction जो है उसमें आपको generalized, primary generalized seizures होंगे, लेकिन उसमें आपको focal भी आ सकते हैं if they have pre-existing neurological conditions या कोई scars। तो रोमानेली ने जो है ना उसने कंक्लूड किया था अपनी मेटा एनालिसिस में कि फ्रॉम द स्टडी दैट focal seizures and seizures during mild dementia should prompt a search for a diagnosis different from dementia. तो अगर mild dementia है ना तो that should not be a cause of seizures, so you should look for something else. ठीक है, फिर स्पेसिफिक चैलेंजेस हमारे एल्डरली बुजुर्गों में क्या होते हैं। ये वोसल की एक स्टडी है जिसमें उसने 54 पेशेंट्स को एनालाइज किया था with mild cognitive impairment and with Alzheimer's disease and with subclinical epileptiform abnormalities and compared them with control patients, ठीक है। तो the study group had an earlier onset of cognitive decline compared with the control group without epilepsy। तो जिनको epilepsy थी उनको MCI भी जल्दी हुई और और अगर उनको ये दोनों चीजें थी, यानी जिनको मिनिमल कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है और उनको एपिलेप्सी भी है,
तो उनकी कॉग्निटिव डिक्लाइन ज्यादा जल्दी हुई एज कंपेयर टू जिनको एपिलेप्सी नहीं थी। फिर एल्डरली सीजर्स जो हैं वो वही बर्डन ऑन केयर गिवर्स होता है व्हाइल वर्सनिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ। आपकी तो दोस्ती नहीं चली गई और तो- आपके लिए फ्लावर छोड़ के गई हूँ। So then there are higher, sorry, excuse me. So then there are higher risk of accidents and injuries, obviously. लेकिन वैसे ही उनका बैलेंस ऑफ हो रहा है, उन्हें ऑस्टियोआर्थराइटिस भी है, उसके साथ अगर सीजर होता है, तो that can cause a lot of effects. So elderly में not every fall or every confusional state is a seizure. It could be syncope बहुत common है, TIAs बहुत common है, transient global amnesia that can behave like a complex partial status, arrhythmias, metabolic disturbances, psychogenic episodes. So ictal confusion and staring may be the only sign of seizures with a lack of typical motor manifestations. They're often accompanied by prolonged post-ictal phases. The social setting makes obtaining an accurate history of the event and comorbidities very difficult. These are the challenges that we as doctors really face. And the pitfalls are that we don't sit and listen to the patient, hear them out, see what's going on, ताकि हम हर एक को जो है लेविट्रासिटाम नहीं दे रहे होंगे, हम हर एक को जो है वैल्प्रोइट नहीं दे रहे होंगे, हम हर एक को लेकोसमाइड नहीं दे रहे होंगे, या एक्सेट्रा. तो those are, the drug therapy. Drug therapy is another challenge elderly में. क्यों? क्योंकि most of them are on polytherapy already. ठीक है? And there's a slew of pharmacokinetic changes. And that elderly में जो हो रहा होता है, liver weak हो रहा होता है, kidney weak हो रही होती है. And then ये drug treatment को elderly में complicate करता है. Anti-seizure medicines like phenytoin are highly susceptible to aging changes, such as decreased total proteins, albumin, and protein binding, and hence fluctuate as much as tenfold. Hepatic and renal diseases can further complicate the picture. Hepatic mass, blood flow, and metabolism all diminish by about 10% for every decade after 40 years. तो आप खुद ही देखें कि जब ये सब चीजें वीक हो रही हैं, तो वो ड्रग्स जो कि साइटोक्रोम P450 सिस्टम से जाते हैं, जो कि बहुत सारी एंटी सीजर मेडिकेशन से आती हैं, they should be avoided, and if not, they can cause a lot of encephalopathy and problems. Renally clear drugs like levetiracetam, topiramate, gabapentin, lacosamide, ये जो है, they are affected with age-related decrease in GFRs. So it is important to titrate the dose more accurately and to obtain drug levels during. अब ये कि मैंने कह दिया drug levels obtain करें, इनके किसी के भी इन drugs में से किसी के भी drug levels पाकिस्तान में unfortunately available नहीं है. तो VA में, अमेरिका में वेटरन्स अफेयर हॉस्पिटल्स होते हैं, जिसमें के फौजियों के और आर्मी के लोगों के सारा डेटा और सब जमा किया जाता था. द वेटरन अफेयर कोऑपरेटिव स्टडी जो है ना, इसमें आप सारी बहुत कुछ देखते हैं, सारा डेटा, जो कि डेटा हर चीज का बहुत अच्छा है. तो इसमें सीजर्स का भी देखा है, एंड 60 years एंड ओल्डर वेटरन्स को भी देखा, उनके न्यू ऑनसेट सीजर्स को देखा. तो उन्होंने उनको दिए गई gabapentin, lamotrigine and carbamazepine. At the end of 1 year, patients on lamotrigine showed the best retention, while those on carbamazepine showed the worst. तो elderly में जब आप दें, तो आप make your choice, make a knowledgeable choice. ठीक है? Now you know कि हम किस चीज, हम एक pitfall को किस तरह से हम वो कर सकते हैं. फिर Brody and his group, they showed similar findings, with patients on carbamazepine having a higher dropout rate than lamotrigine. Valproate ने mood stabilization तो बहुत अच्छी की elderly के लिए, लेकिन the sheer burden of the side effects makes it a poor candidate. ठीक है? आजकल मैं बहुत देख रही हूँ कि valproate के साथ बहुत elderly आ रहे हैं हमारे पास. मैं ER में अभी कर रही हूँ,
तो मैं देख रही हूँ, मैं ये पूछती हूँ कि why valproate and why not? Now we have other options. पहले तो हमारे पास इतने options नहीं थे ना, we had to balance it out, but now we do have. So in a randomized trial of levetiracetam, phenobarbital, and lamotrigine in patients with Alzheimer's disease, 58 to 71% of patients had 50% seizure reduction during 1 year period. तो सबसे अच्छा प्रोफाइल ऑन कॉग्निशन किसका था? लेवेट्रासिटाम का. सबसे पॉजिटिव इफेक्ट ऑन मूड किसका था? लमोट्राजीन का. साइकियाट्रिक सिम्टम्स किससे थे? लेवेट्रासिटाम से. Phenytoin, phenobarbital, valproate tend to have more cognitive side effects, while topiramate can worsen. Topiramate in elderly, it can worsen verbal memory, attention, and cognitive speed in elderly. तो जिनको डिमेंशिया या एमसीआई है उनसे टोपाइरामेट को थोड़ा दूर रखें. तो ये जो सारे पिटफॉल्स है ना, आप इनको ओवरकम कर सकते हैं. Increasingly, आजकल lacosamide is being used, but no real studies have been conducted in the elderly with this agent. लेकिन it's showing, मगर lacosamide का क्या? Cardiac symptoms, तो आपको cardiac देखना होगा elderly में. And I will stop here and thank you. I think I've taken up more time than I should have, but thank you all very much for your patience. Any questions or anything? I'm here. Thank you very much, Dr. Fowzia. We have short of time. We'll take the question at the end. Now, the next